ये देखिए आपका न्यूमेरिकल है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट within 20 seconds by applying brakes. Find the velocity if the retardation due to brakes is 2 meter per second square. Your question is still here. एक चीज मैंने यहाँ पे देखो, आप जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ये मैंने हटा दिया जो क्वेश्चन में दिया था. अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब आपके समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है. तो ये मैंने कंप्लीटली आई हैव ओमिटेड इट. और दूसरा मैंने इसमें आपका थोड़ा सा ऐड कर दिया, ऑल्सो फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स. अब देखिए, नाउ in this question statement is very clear. The first thing is written brought to rest, and the second thing is applying the brakes. The two things are given, so according to the both statements it means final velocity v is equal to 0. Given में आपका now in your questions now you see time t is given as your 20 second and retardation due to brake it is given as your 2 meter per second square. So when retardation or deceleration or negative accelerations, you will keep a is equal to minus 2 meter per second squares, and you have to find out according to the question velocity. But see which velocity you have to find out. So now it is very much clear कि if after applying the brake final velocity is 0, it means you have to find out the initial velocity. A second, I have added a little one to find out the distance now traveled by train after applying 20 second brake. तो ये आपका देखो दो चीजें आपको निकालनी u और s इसमें. अब कैलकुलेशन जो वॉकिंग सेक्शन एरिया है, now in your questions it's very clear, three known quantities are given and 2 unknown quantities you have to find out. So on the basis of 3 unknown and 2 unknown required formula which you have to use. So now by first equation of motion v is equal to u plus at. The value of v is 0 and you have to find out. In place of a you are keeping minus 2 because it is retardation, and t is 20 seconds. So plus minus is minus, u is equal to minus 40. This 40 will be transposed on the left hand side by changing its signs. So initial velocity u is equal to, it's coming up 40 meter per second. Now in the second case you have to find out the distance. So now for finding out the distance you will apply the second equation of motion, s is equal to ut plus half at squares. After keeping the value of ut and a, s is equal to देखो 40, t is equal to 20, half is already there, the acceleration is minus 2 and time t is 20 का square. So now 2 is going to be cancelled this one, so plus minus is minus, 40 20 is 800, so now 20 square is आपका 400. So now this 400 is subtracted from 800, so now distance is coming 400 meter. So now it means initial velocity you have find out. Now this is the 40 meter per second and s distance 400 meter. Now see this distance you can also find out by the help of the third equation of motion, which is v square is equal to u square plus 2s. इससे भी आप निकाल सकते हैं, सेकंड नहीं थर्ड से भी निकाल सकते हैं. v means 0 का स्क्वायर because it was a final velocity, and u means 40 का स्क्वायर plus 2 into a acceleration is minus 2 because it was a retardation. Now you have to find out s. Plus minus is minus, 2 2s are 4, s आपका तो 40 का स्क्वायर is 1600 minus 4s is equal to 0. This 4s is on transposing, it's changing into the plus 1, and you have to find out the value of this s. 1600 by 4 by cross multiplication, s is equal to देखिए 400 meter now distance. तो आप सेकंड से भी डिस्टेंस निकाल सकते थे, आप फर्स्ट से भी निकाल सकते थे. इसमें स्लाइटली एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, मैंने फिर आपका देखो और करके किया है, टाइम आपको देखो 20 सेकंड दिया हुआ है. रिटार्डेशन देखो, अगर मैं रिटार्डेशन को यहाँ पे a लिख करके ये 20 सेकंड पॉजिटिव मान रहा हूं, तो उस समय देखो मैंने क्या क्लियर किया, देखिए फॉर्मूला इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू रिटार्डेशन लिखा हुआ है. तो v इज इक्वल टू u माइनस 80 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने रिटार्डेशन की मदद से प्लस को माइनस में लिख दिया. देखिए आपका
तो जब मैं माइनस में लिखूंगा इस फॉर्मूले को, तो नाउ व्हेन एवर आई विल शिफ्ट और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस ए, इट विल बी ऑलरेडी आपका नाउ टेकन एज ए पॉजिटिव वन बिकॉज माइनस साइन इज ऑलरेडी इन द फॉर्मूला. सो नाउ देखो v 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस a इज 20 एंड t इज ए. तो प्लस माइनस का माइनस देखिए, एंड ये आपका 22 सा 40 उधर चले जाएगा. तो नाउ देखो 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 40 उधर गया, 40 इज इक्वल टू यू, ये ओटी में गया. तो नाउ स्वैपिंग करने पे आपका ना देखो u इज इक्वल टू आपका 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. द सेम थिंग देखिए आपका नाउ, इफ आई एम अप्लाइंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s. फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला इज प्लस, लेकिन आई एम राइटिंग हियर आपका माइनस 2s बिकॉज आपका नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन आपका नाउ देखो ये मैंने इसको अकॉर्डिंग टू आपका रिटार्डेशन ले लिया है. तो फॉर्मूले को देखो मैंने प्लस को माइनस में चेंज कर दिया है. तो व्हेन v स्क्वायर 0 का स्क्वायर आपका u आपका 40 का स्क्वायर माइनस, देखो मैंने जबकि फॉर्मूला प्लस होता है मैंने माइनस 2 लिखा है बिकॉज वेन एवर आई विल शिफ्ट द वैल्यू ऑफ दिस a एक्सेलरेशन इट विल बी केप्ट आपका पॉजिटिव, क्योंकि माइनस होने से ऑलरेडी इट इज शोइंग आपका नाउ द रिटार्डेशन. तो नाउ 1600 माइनस 4s आपका देखो, तो 1600 4s उधर ओटी में चला गया. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो s इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपका 400 मीटर आपका स्क्वायर आ गया. तो अगर आप पॉजिटिव फॉर्मूला रख रहे हैं तो आप रिटार्डेशन माइनस में रखिएगा, और अगर फॉर्मूले को आप अकॉर्डिंग टू रिटार्डेशन माइनस में बना रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पॉजिटिव रखिएगा.